today's guest is our beloved ma'am, Professor Sheetal ma'am from our department only. All will be very enthusiastic to listen her about the IPRs, because this is very important lecture as per your copyrights filing, patent filings, okay, how that process is actually handled. Because this will be very compulsory for all the students to do the copyrights and other things, publishing the paper and all the things, okay, as per your project consideration. So I welcome ma'am for this lecture. I want to clap for ma'am. So ma'am, I request you to carry forward with the session. Please anyone, please sit here. To forward the 50 minutes. Thank you sir, Ravi Mali sir, for your kind information and kind words. Today I am here to tell you about something about intellectual property rights, which is called as an IPR. You have many of times you have listened upon the IPR, isn't it? But you don't know what is IPR. We are all aware. Next. We are all aware about the property, isn't it? Property means what? Property means what? Property means what? Anyone? Can you tell me what is property? Till now, what we think about the property? Land, house, ornaments, vehicle, is it? That belongs to us. That the things which belongs to us. Why we say it belongs to us? That means no one can have the authority to take that without your permission. Is it? Is it? That is called as a property. Till now we have known about these things. So property is nothing but the things which belongs to us. Next, that is belongs to us means without our permission, anyone cannot take it. Anyone cannot hold it. Either that property can be sold or it can be rented. Is it? That is called as a property. Now similar things is called as an intellectual property rights. The property that is being recognized by your intelligence. Isn't it? Property है. लेकिन कैसे property है? That comes from your mind. That is by means of your intelligence. That is called as an intelligent property. Intellectual property. Once you register that property, that it is called as an intellectual property rights. Okay? So we are here. What are the property? Why there is a need to do the intellectual property rights? What are the property rights that can be registered? And how can we able to register that rights? Okay? So I am here to give you awareness about that. And every student, every group of the project have to register either for the intellectual property rights, that is patents, and everyone have to do for the copyrights. Okay? So you must know how, when, and where to register. Is it? Okay? Next PPT. So till now we know that. What is property? The property that belongs to us. Without our permission, no one can take it. Either we can rent that property or either can sold that property. And after doing that, what you will generate? You will generate the revenue. You will generate the money. Isn't it? That is called as a property. What till now we know it. Is it? Now,
isn't it? You will be awarded as you have filed a copyright and patents. You have some social economically you will be rewarded for that. You have some economical status when you do the copyrights and patent, because anyone cannot able to do it. Some out of 1,000 only 5 students can do it. Why I am telling it? Because into my credit there are the 7 copyrights and 4 patents into my credit till now. In the journey of 17 years of my education on academics, till now I am having 4 patents and 7 copyrights into my credits. So I have done it. I have given the thought process on these copyrights and patents. Okay. So therefore I am here to tell you what are the constraints, how to do it, what the things to be remembered. Okay. Next. Come before that. So the same, that is selling, using, selling, offering for sale. है ना, जैसे हम प्रॉपर्टी करते हैं, खरीद लेते हैं, उसको हम रेंट कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, isn't it? For generating revenue. Sometimes we can do the IPR also. We can without your permission, no one can sold it, no one can rent it, no one will do it. Okay, and that is nothing but the IPR, which is called as an intellectual property rights. With the property and the intellectual property rights have the same constraints, isn't it? If it belongs to us, without your permission, no one can sold it. No one can. You can generate that things. You can generate in the form of revenue. You can generate in the form of money, isn't it? The same thing is being done for the copyrights. Next, so we have to know about what is IPR, isn't it? What are the categories? If I come, I can divide my IPR into 3 categories. That is research paper, copyrights and patents. I am very much eager to give you the benefits of copyrights, research papers and patents. Okay? So I will divide my IPR into 3 categories. So these property, which is called as an intelligent property, which is called as an intellectual property rights, it has 2 types of property. Just I have told you, tangible and intangible property. Tangible means moving car, that is movable and non-movable devices or things. And intangible means that comes under the category of intellectual property, intelligent property. That the invention, that is innovation, that comes from your mind, comes under the category of intellectual property. Are you getting? I think you are getting it. Is it? So these intelligent property, intellectual property are divided into 2 different categories called as an industrial property related and copyright related. Okay? हम 2 चीजें कर सकते हैं. एक इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, इसको भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इस पेपर में ला सकते हैं, या तो हम कॉपीराइट ये कैटेगरी को भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में लाके रख सकते हैं. ओके, सो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी रिलेटेड इज नथिंग बट अ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स. You will come to know what other every categories of this intellectual property rights. Next. Now, very important thing. How can you identify that you are intelligent? है ना? How will you identify? हम intelligent हैं, हमको intellectual properties करनी है. How can you identify? Isn't it? So now identify where is your intelligent. Isn't it? आपके पास कुछ intelligent है. अब इस intelligent को आपको property में divide करना है. इस category में अगर आपको लाना है, तो you must identify that where is your intelligent. So how this intelligence is to be converted into property, very important things. है ना? हमारा intelligent है, बहुत सारी चीजें होती है, हम
bring onto the paper and to be broadcasted to the India, isn't it? Then it is said that is an intellectual property, is it? So, how to convert that intelligence to your property, is it? Now, either some of the students might have the skill of making videos, isn't it? Some of the students may have some unique designing talent. Some of the students have some technological innovation. Might some students have some painting or poem, writing, story, something like that. Every student will have some of any of the other things into his mind, isn't it? Now these things you can bring into your property. You can sold it, you can generate the revenue from this. Okay? Means the things which is going on in your mind that can be converting into your property. It might be a poem, it might be a story, it might be an innovation, it might be a painting, it might be a video, anything. Okay? Next, so you can convert anything into your credit to your property. Next, same thing, the types of IPR. IPR are categorized into different types called as a copyright. Very important thing that we have to do. Every student, every group of your project have to go for the copyright. Okay? So सभी प्रोजेक्ट्स को कॉपीराइट करने ही है. पिछले जो आपके सीनियर्स हैं, there were 23 groups. All 23 groups have filed for the copyrights. Okay? Every 23 groups have filed for the, means almost every student have filed for the copyrights. Trademarks. Trademark, this is also a category of IPR. Patents, industrial designs, and geographical indication. This category comes into the IPR. Till this, have you understood? What are the categories? What are the types of IPR? Copyright, trademarks, okay, designing, that is innovation, patent, geographical indication. These all you will see one by one. You will come to know that all the types are categorized into the types of IPR. Next. Now, previous one. Patent means what? Patent is nothing but the process and the product. If you are innovating some new products or a process, then you can able to file a patent. Some invention, आप कुछ invention कर रहे हो, कुछ innovative steps ले रहे हो, and by using these innovative steps, if you are developing some product or the process of developing the product, then you can able to file patents. Is it? Once for we have filed one patent which is almost I think 3 years back, which is gone for the granted. We have generated one antenna, microstrip page antenna, and that antenna has a frequency about 320 GHz, which is being number of companies are going for that patents, which has been filed by us. Some of our faculties we have filed that patent, and I am very pretty sure that up to 1 crore that microstrip patch antenna will be taken by the company. So, means हमने generate किया, innovation किया, isn't it? Some of the microstrip patch antenna already है, बहुत है. लेकिन what we have done? Some of the parameters, we have boosted that parameters. We have designed that microstrip patch antenna, which was above the 20 GHz of frequency. So, this we have done. We have designed one product and we have filed for the patent. So that patent, there are some types of process. If it is granted, if it is taken, it is so by
by some companies, we will earn lots of money from that product, that patents. So you can generate the revenue from the patents. Is it? You can generate the patent. So what it happens? It gives me some reward. It will increase my CV. I have some status in society that one patent तो सभी डालते हैं, लेकिन ग्रांट बहुत कम लोगों के होते हैं. Isn't it? So I will generate a lot of money from that. Is it? So this is my credit. It goes to my credit. Is it? Okay? As a lot of faculties, lot of companies are going for patent and they used to generate number of revenue from that. Okay? So patent is who will file the patent? Either product or the process. Okay? When you do this, you can able to generate a patent. Okay? Industrial design. Industrial design means if we talk about the mechanical department, isn't it? Some of the device, if they change the dimension, if they change the shape of some devices, they can go for the industrial design filing. Okay? है ना? अगर हम कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस लेते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस में कुछ कंपोनेंट, कोई specification, that is a construction specification, if you change it, we can able to say that comes under the category of industrial design. Okay? After that, trademarks, very interesting thing. Every company have to go for the trademarks. Okay? Apple का मोनोक्रम देखा, BMW का, is it? Mercedes, Jaguar, isn't it? It has its own identification, that is logo. And due to that identification, we identify this is nothing but a BMW, isn't it? This is a mobile that belongs to an Apple, isn't it? This is the mobile that belongs to a Samsung. Is it? Is it? That is a fact. So every company, before registering into the social list, हम वो लोगों से पहचान लेते हैं कि ये इसी कंपनी का है, isn't it? इसका एक ट्रेडमार्क है, इसका एक आइडेंटिफिकेशन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, isn't it? एप्पल सैमसंग वाला यूज कर सकता है क्या? नहीं, isn't it? उससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एप्पल का मोबाइल है, isn't it? प्यूमा के शूज अगर हम खरीदते हैं तो दिखता है, isn't it? प्यूमा का पता चल जाता है कि उसका आइडेंटिटी, उसका लोगो से पता चल जाता है कि प्यूमा के शूज या फुटवेयर से करके, isn't it? So this is our trademarks. हल्दीराम का ट्रेडमार्क है, isn't it? So these are every company have to register for the trademarks. That is nothing but it is a word. Trademark means a name, word, name, logo, labels, monochrome, gram and slogan. These comes under the category. If you are having such type unique thing along with you, you can go for the trademark registration. You can go for the trademark. That is a unique identification of your company, either your products or anything. Isn't it? So that is nothing but a trademark which comes under the IETE. Next, copyright. Very important things, copyright. Just I have told you, copyright कौन कर सकता है? That is literary works. Literary means research work. Okay? Research work, painting, sculpting, videos, that is cinematography, isn't it? That comes under the copyrights. तो हम या software, some programming किया by the means of some software, that can be done as a copyright. Okay? You can file for the copyrights. Geographical indication. Geographical indication means it gives an identification to some particular location. That is Nagpur. It is famous
for the copyright, patent, and if any of the student want to go for an entrepreneurship or want to start up, they can go for the trademarks. Okay, next. Why we are registering or why we are very interested to do your intelligent convert it into property. Intelligence को हम property में क्यों convert करना चाहते हैं? That reward, you get reward from that intellectual property. You get the recognition and protection from that intelligence. Okay? You get the encouragement and the growth. You get the growth. अगर आप कहीं इंटरव्यूज के लिए जाते हैं and if you tell that we have filed for one patent, it gives some different type of status to you. Okay, so it gives you a protection, it gives you reward, it gives you growth and encouragement. अगर एक बार मैंने पहली बार जब कॉपीराइट डाला था तो मुझे ये सोच के मैंने डाला था, मैंने बहुत नाम सुना था कॉपीराइट, तो जब डाल के तो देखते हैं क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट होगा और क्या होगा. I have listened from many of the faculties कि मैंने एक कॉपीराइट कर दिया, मैंने एक पेटेंट कर डाला. I thought that क्या करते होंगे इसमें, क्या ही होता होगा. I am having some data, I am having some project work which was on my paper. I have not developed anything which was only on my paper. That thing I have written in my own language and I have gone for the registration of copyrights. I have gone to the government site. For registration only 500 rupees is required. After that, many months is taken. Once I have uploaded all my required data, whatever they required, and वो एक महीना चला गया, 2 महीने चला गया, उसमें रिस्क्रूटिनी नहीं आता था. I thought that it will be gone for the hearing and it will be rejected. After some time, that is after I think after 3 or 4 months, it is defined that on the side that is registered. So I was so happy कि हम खुद से भी अगर चीजें, मैंने I have not taken anyone's help, but just I have taken a trial and error method for that copyright. I have thought that we must do by own self. I have gone through some videos. I have studied that what is copyright, how to register for the copyright, what are the steps we have to follow for the copyright, and I have done it. And after 4 months, that my copyright is being registered. Okay, so such type you can also take the encouragement and you can do for the copyrights, which is a very basic thing. Very basic. जैसे आप research paper डालते हैं ना, वैसे ही हम copyright file कर सकते हैं. Okay. So after putting into the copyrights, that is IPR, it gives you the reward, it gives you the encouragement, you get the protection. I will tell you in the next slide for how many years you get the protection for the copyright and the patents. Next slide, please. So these are the copyrights that is you can either writing, whatever you are writing. Suppose you are making some notes in your own language. You can go into the copyright. You can take the stamp. That copyright करना means what? What is that? It's very important thing. कि copyright करना means what? No one can steal your things. No one can use your things until and unless without your permission. Once if I done the architecture of microprocessor in my way, that will be put into copyright. If I get registered on that microprocessor, architecture of microprocessor, no one can use it, the architecture without my permission. अगर आप बहुत सारी साइट्स अगर आप देखते होंगे तो you come to know कि किसी भी साइट पे जाने के बाद एकदम बॉटम लाइन रहती है at the rate of copyright 2019, copyright 2018, something like that, isn't it? That things is being registered. Without their permission, you cannot use it. Okay? So that will be stolen, isn't it? So that is the meaning of copyright. Copyright करना means हमारी चीजें हम हमारे क्रेडिट में ले रहे हैं.
ठीक है, हमारे वो क्रेडिट कौन सा क्रेडिट है? इंटेलिजेंट क्रेडिट्स, इज इट? So that is a writing. Music, if someone is having to do some music, it can also be copyrighted. Computer program is software programming, painting, sculpting. Okay, but students, as we belongs to academics, so we don't want to. It is your it is your hobby. You can go for the painting and sculpting, but you have to copyright for the academics for your project. Okay, that comes under the category of literary work. That comes under the category of computer programming. Okay, so these you have to do. Next, now there is an act of copyright. That act was in 1957. It was developed a Copyright Act and ruled in the year 2013. There is a number of rules are being changed in 2003, 2005, 7, and at last that the new copyright rules was designed in the year 2013. So copyright protect the expression of thoughts, not an idea. हम यहाँ idea नहीं डाल सकते हैं. मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरी बाइसिकल हवा में उड़े. I cannot put it. I have to put it into on the paper. I have to draw all the specifications. अगर उसको हवा में उड़ाना तो जमीन पे नहीं चलाना है तो, isn't it? So we can protect the expression of thoughts, not an idea. Idea आप copyright नहीं कर सकते हैं. मुझे टाटा बिरला बनना है, ये ideas मैं नहीं copyright कर सकती. Is it? So you have to. उसके लिए आप innovative steps कैसे लेंगे कि आपको टाटा बिरला बनना है? That you can be able to copyright. Are you getting example what I want to make? Not an idea only. That is idea cannot be copyrighted, but thoughts to be copyrighted. Okay. Very important thing, very interesting thing. Copyrights comes to credit up to 60 years. अगर मैंने copyright किया तो 60 years तक वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड रहेगा, है ना? जैसे हम प्रॉपर्टी डील करते हैं, अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, is it? तो हम रजिस्ट्री करते हैं कॉपीराइट की, मींस हमारे घर की, है ना? तभी वो बिलोंग टू आवर क्रेडिट. हमारे परमिशन के अलावा कोई नहीं यूज कर सकता. तो ये सर्टेन टाइम तक अगर हमने लीज को प्रॉपर्टी ली है तो सर्टेन लाइफ स्पैन तक हम इसको यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर द रिन्यूअल. इज इट? अगर वो प्रॉपर्टी आपको खुद को फिर चाहिए तो फिर से आप उसको रिन्यू करते हैं. अपने लीज नाम सुना है कभी? हैव यू गॉन टू द लीज? इजंट इट? द प्रॉपर्टी कैन बी लीज आल्सो. इज इट? है ना? लीज कर सकते हैं. लीज करना मींस ऑलरेडी वो बिलोंग्स टू अदर है, अदर की प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी को आप उधारी में कुछ सालों के लिए खुद यूज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ लीज. आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, इफ आई हैव टेकन द लीज प्रॉपर्टी फॉर 10 years, after 10 years I have to again renew it. Isn't it? Same is with the copyright. The copyright come into credit up to 60 years. बहुत होगा. 60 साल की उम्र तक अगर कोई चीजें अपने क्रेडिट में आ रही है, वो भी आपका इंटेलिजेंट, इट इज वेरी great for you. Is it? So the copyright comes, a term of a copyright is up to 60 years. Now very important thing. The copyrights can be divided into two different categories called as economic rights and moral rights. Economic rights can be transferable, है ना? पापा ने खरीदी हुई प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है, वो उसका इकोनॉमिक राइट्स ले सकता है ना? और कुछ ऐसे रहती है जो मॉरल राइट्स है, जिसको हम नॉन ट्रांसफरेबल है. घर को एक जगह से उठा के अगर मुझे चाहिए तो घर उठा के दूसरी जगह पे लेके जाऊंगी क्या? नहीं. तो नॉन ट्रांसफरेबल है ना? घर के अंदर की सुविधा का यूज करना, दैट इज नथिंग बट इकोनॉमिक राइट्स. लेकिन घर को शिफ्ट करना, इट इज नॉट पॉसिबल. Isn't it? That is called as non-transferable. Similarly, your right
this is nothing but this is divided into two categories, economic and that is a transferable and non transferable rights. Next PPT. Now very important thing, which are the only site where we can register for the copyrights. You know many of the faculties, मैंने जैसे बताया कि मैंने बहुत गट्स किए, मैंने बहुत हिम्मत करके कॉपीराइट 500 रुपये में डाली। यही चीजें शायद मैं किसी लॉयर एजेंट को देती थी, IPR एजेंट को देती थी, तो might may have taken 10,000 rupees to register for the copyright. And I have seen many of my colleagues, we are going for the agent, IPR एजेंट भी होते हैं, recognized IPR एजेंट होते हैं, जो lawyers होते हैं ना वो ज्यादातर IPR एजेंट होते हैं, तो वो बहुत पैसा आपसे कुछ नहीं करना पड़ता, या तो कुछ लोग आपको गलत तरीके से बताएंगे कि कॉपीराइट के साइट पे ये साइट पे जाओ। नो, देयर इज ओनली वन साइट व्हिच इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड साइट, दैट इज copyright.gov.in. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन राइट इट, यू कैन नोट डाउन दैट देयर इज अ साइट, authorized site, that is copyright.gov.in. Okay, so this is the site where you can go for the registration of your copyright. Now what do you have to do after going to this site? You can able to see e-filing of application, which is on your left hand side, e-filing of application. Okay, we are always going for the e-application, and after registration, that is nothing but we say form number 14. For filing the copyright, you have to go for filling on form number 14. Form number 14 is having 4 steps. Step number 1, the information, basic information. Second thing, what is to be copyrighted? क्या करना चाहते हो आप? लिटरेरी वर्क, कॉपीराइट लिटरेरी वर्क करना चाहते हो? That is research वर्क कॉपीराइट करना चाहते हो? या प्रोग्रामिंग कॉपीराइट करना चाहते हो? या some painting, video, whatever? That is goes to the step number 2. Who is the author? First author have to go for the uploading the signature of the author. आपको डिजिटल सिग्नेचर वहाँ अपलोड करनी होती है, ठीक है, in a form number 40. After that, form number step number 3, where you will upload all the documents. Upload means document upload करना है, means abstract लिखना है कि exactly what you want to register. आपको क्या करना चाहते हो वो आप abstract उसमें डालोगे, और step number 4 is nothing but a payment, where you have to go for the payment of 500 rupees. Okay, so these after doing these successful 4 steps, you will be registered for the copyright. After some day, whatever the data, that is form number 40, acknowledgement slip, that is a payment slip. After the data which is to be copyrighted, that is to be uploaded, and NOC, no objection certificate, that is it is my work, it belongs to my invention, it is my thoughts. This is to be written into a NOC, which is called as a no objection certificate. Okay, which these 4 things you have to upload it into this site, and after certain time period you will check your copyright site. You will find that it will be whatever the status of your copyright, it will be shown on this site. Okay, इनमें अगर मेरा डायरी नंबर जनरेट होता है यहाँ, वो डायरी नंबर मैंने अभी लाया नहीं, मेरा यूजर आईडी पासवर्ड आई हैव शोन यू कि कितने रजिस्टर्ड हुए, कितने क्या हुए करके, तो आप अपना एनओसी, दैट इज अ डायरी नंबर अगर आप डालते हो तो आपका स्टेटस पता चलता है कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, स्क्रूटिनी में है, रजिस्टर्ड है, क्या है, ये चीजें आपको समझेगी. एवरी स्टूडेंट हैव टू डू इट. So don't take it so leniently. I will not take in any of the other way. फिर बच्चे लोग लास्ट मोमेंट में, I have seen that previous final year student at last moment में मैडम हमें क्या करना चाहिए, प्लेगरिज्म आ रहा है, ये आ रहा, वो आ रहा, कैसे करेंगे? This not be the condition with you. Therefore, at the start of your
okay, for the IPR. So you have to be ready for filing of this all things, okay. Next thing. Now, trademarks. This is the act in 1999 which was ruled in 2017. जब हम company registered करते हैं तो you have to identify your own logo, that is called as a trademark, okay, which was being ruled in the year 2017, okay. Where we can register this trademark? There is official site for the registration of trademark, that is www.ip.india.nic.in, है ना. अगर आप देखते हो next, this Yahoo, Google, isn't it? IBM, HP, Mobile, Pepsi, Mercedes, McDonald, these are all the trademarks which is being registered by the IETE.nic.in. तभी वो globally it is used. Pepsi, है ना, पहले 10 साल पहले की पेप्सी का आपने बॉटल, इवन बॉटल इज टू बी ट्रेडमार्क. पहले अगर पेप्सी देखी होगी आपने बिफोर 10 years, you have seen that ग्लास की रहती थी, ऐसे रोल टेक के ग्लास का कंस्ट्रक्शन था, उसका स्ट्रक्चर था. अभी प्लेन आती है, ऐसा बॉटल टू अपर ऐसा थिक होते जा रहा है, isn't it? So this is a trademark. ये आइडेंटिफाई कर दिया पेप्सी ने कि मेरे बॉटल का कंस्ट्रक्शन, मेरे बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग इसी तरीके से रहेगा. इसके अलावा कोई भी बॉटल पे वो बिस्लरी के बॉटल का कंस्ट्रक्शन वाला यूज कर रहा है क्या पेप्सी? नहीं. Isn't it? So this is the identification, जो पता चल जाता, ये बॉटल देखते ही पता चल जाता कि ये पेप्सी की बॉटल है ना. अगर नहीं स्टिकर होगा तो भी हम समझ सकते हैं कि ये बॉटल पेप्सी की है. पता चल जाती है. फ्रूटी छोटी वाली 10 रुपीस की फ्रूटी मिलती है, isn't it? जो भी मिलती है, I don't know, I never used to drink that. आपने देखा होगा फ्रूटी का, is it? Green sauce, is it? So these are all what I want to mean. I'm not here to joke with you. What I want to mean, I want to mean that every company have done some trademarking. He have given some identification either by the means of construction, either by the means of some logo, either by the means of name. Is it? So this is done under the category of trademark, which is being registered under the www.ipindia.nic.in. इसमें जाके हमको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ता है. इसलिए आप स्टार्टअप वाली जो कंपनीज होती है, आपने देखा होगा, जैसे S.B.J.I.T.M.R का अगर मुझे ETC का लोगो अगर आइडेंटिफाई करना 20 years के लिए यही लोगो रहेगा तो आई कैन एबल टू डू द ट्रेडमार्क फॉर दैट, isn't it? अगर आप पॉलीथीन का स्पेसिफिकेशन चेंज करके कुछ चीजें अगर लाते हो इन मार्केट और ये मार्केट में आपको लानी है तो यू कैन एबल टू डू द ट्रेडमार्क. तो स्टूडेंट्स हैव अ मच बेटर थॉट प्रोसेस फॉर दिस. इवन कंस्ट्रक्शन में, लोगो में, स्लोगन में, वेरी देयर एट एनी मोमेंट यू कैन गो फॉर द ट्रेडमार्क आल्सो. ओके, नेक्स्ट. सो दिस इज द ट्रेडमार्क. SBI का, कोका-कोला का, इसमें नेम और लोगो दोनों आइडेंटिफाइड है, isn't it? So this is nothing but a trademark. So types of trademark, either the word mark, figurative elements, फिगर को भी आप ट्रेडमार्क के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं. साउंड मार्क, होलोग्राम मार्क, कलर मार्क, स्मेल एंड टेक्सचर. इट कैन बी, इतने चीजों का हम ट्रेडमार्क के अंदर ला सकते हैं. सो इट कैन बी दैट इज अ वर्ड मार्क, फिगरेटिव मार्क, फिगर अगर हमको करना है, साउंड मार्क, होलोग्राम मार्क, कलर. ठीक है, जैसे SBI का आइडेंटिफाई है, SBI अगर नागपुर में है तो ऐसे ही है और मुंबई में जाते तो डिफरेंट है, ऐसा है क्या? नहीं. SBI ने अपना एक मार्क, कलर से SBI को डिफाइन कर दिया, isn't it? So these are the types of trademark we can go under the trademark categories. Okay, next. हाँ, so these trademark के लिए मैंने जैसे बताया IPindia.nic.in, इस साइट पे दिस इज वन
it almost take 4,000 rupees to find the trademarks. Okay. Next. After that, design, industrial design. Industrial design, it is very interesting thing. Mostly mechanical students go for the industrial design. Very low student, that is अगर हम एंटीनास के बारे में करते हैं तो हम इंडस्ट्रियल डिजाइन पे जा सकते हैं. जैसे एंटीनास में हमने इंडस्ट्रियल डिजाइन किया है. क्या किया? माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना की जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं पैच एंटीना या कोई भी एंटीना की साइज डिक्रीज होती है. तो हमारा कंस्ट्रक्शनल डिवाइस स्पेसिफिकेशंस बढ़े, कंपोनेंट का साइज डिक्रीज हुआ. Okay, so we have gone for the industrial design. So appearance of articles, appearance आप देख सकते हो पेप्सी और कोको कोला की बॉटल. Appearance of the article, और appearance है इसका दोनों का, बॉटल का appearance है. That gone for the industrial design. 3-dimensional feature, 2-dimensional time, pattern, color, and terms for the trademark. After 10 years, you have to gone for the renewal. And one time after maximum 5 years. ठीक है, एक बार हमको अगर हम इसलिए आपने देखा होगा पेप्सी की बोतल पहले ग्लास की थी और उसमें ऐसे रिंकल टाइप के सर्कल टाइप के ये थे और जैसे ही उसको रिन्यू करना था इसने अपने बोतल का अपीयरेंस चेंज कर दिया है ना, तो उसने फिर से उसको ट्रेडमार्क के अंदर डाला. ठीक है. नेक्स्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन. जियोग्राफिकल इंडिकेशन मीन्स that is some of the area commonly defined कर दिया. Bhusavar is for bananas, isn't it? Define कर दिया. Nashik is for grapes. Karnataka for which thing? Lucknow is for embroidery. Barley prints in Karnataka is maximum. It is been defined. That is a geographical indications. ये Nagpur is defined for oranges. So this is being defined as a geographical indication that comes कि geographical हमने agriculture products को define कर दिया या handmade products को define कर दिया कि ये जगह पे यही जाती चीजें होती है तो इसको ये चीजों के लिए famous identify कर दिया. That is called as geographical indication. You can go for that. अगर तुमने बता दिया जैसे मिर्ची for Bihar, isn't it? Is it? तो वो एरिया geographical क्योंकि वहाँ मिर्ची का जो मिर्ची होती होगी वो मैक्सिमम होती होगी, isn't it? इसलिए उसको बोल दिया कि this is famous for the मिर्ची मार्केट. Isn't it? Similar. Yeah. Go forward. Now very important thing, patent. Patent is term for 20 years. You can take a reward, you can earn, you can learn on growth protection for almost 20 years after filing for the patent. ठीक है. अब लोगों को बहुत पेटेंट नाम सुनते ही लोग इतने बहुत बड़े संकट में आ जाते हैं. इनको लगता है पेटेंट में सही क्या, कुछ नहीं. चीजें तरीके से लिखनी है, चीजें प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, कीवर्ड्स पता होनी चाहिए. ठीक है. वी मस्ट नो द कीवर्ड्स. हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, हमारे पास बहुत सारे इनोवेशन है, हमारे पास बहुत सारे इनोवेटिव स्टेप्स हमको प्रॉपर लेने हैं. हमको इनोवेशन है, इन्वेंशन है हमारे पास, लेकिन इस इन्वेंशन को प्रॉपर स्टेप में फॉलो करना है. दैट इज डन इन अंडर द कैटेगरी ऑफ पेटेंट. दैट इज जस्ट बिफोर दिस आई हैव टोल्ड यू द पेटेंट कैन बी फाइल्ड फॉर प्रोडक्ट और फॉर द प्रोसेस, isn't it? किसी भी H2O को और किसी केमिकल के साथ मिक्स कर दिया और नया प्रोडक्ट निकल गया, ऐसा नहीं बोल सकते. ठीक है. तो which is valid, which is invention, I am very much focusing on the word called as an invention. You have to do some invention on the product or on the process, then only you can go for the patent. या तो दो डिफरेंट तरीके की चीजें
was ruled in the year 2003 as similar to the copyright. Come. This is the site ipindia.nic.in where you can file for the patent. Okay, you can file for the patent. How it is filed? There are some certain forms is to be used. By using that form, you can go for the patent. Okay, till now you have understood what I have told you. What I have told you, have you understood? क्या करना है? कॉपीराइट किस किस का हो सकता है? म्यूजिकल, यस. ट्रेडमार्क मीन्स क्या है? लोगो, नेम, स्लोगन, isn't it? That can be trademark. That is what. By using trademark, what exactly it used to give? It used to give the identification, isn't it? It gives the identification. Now we are going for the patent. Which are the site, authenticate site for copyright and the patent? Trademark. Copyright.gov.in. It is used for the copyrights. Okay. And for patent and trademark and geographical indication, we are using ipindia.nic.in. Okay. Next. Now, very important. What is the necessity and condition to opt for the patent? है ना? हमको करना क्या है? पेटेंट वर्ड कर दिया, इन्वेंशन कर दिया, इनोवेटिव स्टेप्स करना है, लेकिन उसको करना कैसे है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. Right? So next, this is my, I can think, this is my idea. It comes from my brain. It is my innovation. It is my invention state. कि मैं कार के ऊपर ट्रेन को चला सकती हूँ क्या? ये इन्वेंशन कर सकती हूँ क्या? इसको पेटेंट कर सकती हूँ क्या? मीन्स हमको वही चीजें सोचना है जो वैलिड है, जो हो सकता है. नहीं तो मैंने सोचा बाइसिकल को हवा में उड़ाऊं, ये मेरा इनोवेशन रहेगा क्या? ये मेरा इन्वेंशन रहेगा क्या? नहीं. So the things which can be patentable, the things cannot be patentable. That invention cannot be patentable. मेरा इन्वेंशन है, कार को हवा में उड़ाऊं, प्लेन को उसमें बैठाऊं, ये मेरा इन्वेंशन है. Can be patentable? No, because the things cannot be possible. Okay. So what is the invention? What is the invention? According to the Act of 2J, there are certain acts of the lawyer. So, according to the Act of 2J, product or process can be invented and for the industrial application. जो चीजें प्रोडक्ट या प्रोसेस जो भी आप इन्वेंशन सोच रहे हो, that might be used for some purpose. You might have think this pen is patentable. ये पेन पेटेंटेबल है. पहले बॉल पेन था, इंक पेन था, जेल पेन आया, isn't it? There are certain stages of pens. किसी ने सोचा होगा. अच्छा, वो तो छोड़ो. सबसे बड़ी चीज है, कभी सोची है पेपर को साथ में लाने के लिए what it is used? Stapler is used. The stapler is a patentable. Stapler के pins and stapler को क्या किया? पेटेंट किया. तभी उसको वो प्रोडक्ट बनाए और उसको सोल्ड किया इन द मार्केट. जिसने बनाया होगा वो आज भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है. Isn't it? Have you thought? आपको अगर पिन को गड्ढे नहीं चाहिए तो उसके लिए यू पिन, कभी सोचा है यू पिन? ये भी पेटेंटेबल प्रोडक्ट है. किसी ने तो बनाई होगी, किसी ने तो उसको सोल्ड की होगी, तो और आज भी वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है चीजों से. Isn't it? So you have to go for such type of invention and you have to go for. चीजें ऐसे नहीं है पहले पेन एक बार पेन पेटेंट हो गया करके पेन पेटेंट हो गया क्या? नहीं. पेन में भी सर्टेन टाइप की क्रिएटिविटी आई है. सर्टेन टाइप की क्रिएटिविटी आई है
लॉन्ग साइज, isn't it? फिर एक पेन में 4 कलरफुल रिफिल्स डाल के भी होता था। अगर आपने यूज किया तो था ऐसा, है ना? तो these are all the many of these। अभी पहले पार्कर के पेन, पहले इंक पेन आते थे, अभी पार्कर के पेन आ गए। मीन्स पेन में भी कितना इन्वेंशन हुआ है, उसमें एक ही पेन नाम की चीज में इतनी क्रिएटिविटी करके इस चीज को सोल्व की जा रही है, इसका रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं लोग, isn't it? स्टेपलर पेन हो गया, पेन हो गया, वेरी डेली यूज में। अगर आप सोचते होंगे तो ये अपने पंचिंग मशीन, किसी के तो भी दिमाग में आया कभी तो पंचिंग मशीन बनी होगी, isn't it? So these things are patentable. These are all patentable things. So according to the invention, according to the section 2J, the product or the process can be patentable, which is nothing but an invention. आपको invention करना है। And creativity, अगर product है तो उसमें कुछ creativity करके उसको patentable कर सकते हैं, ठीक है? Next, patent ideas for project for patent search। अभी हमने कर लिया। सबसे पहली चीज पेटेंट करते समय you have to identify the keywords। वॉशिंग मशीन, you cannot believe, वॉशिंग मशीन को आज भी पेटेंटेबल कर रहे हैं, पेटेंट हो रहे हैं वॉशिंग मशीन पे। वॉशिंग मशीन तो बनी है ना, वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धो रही हैं, isn't it? But still the modification, still the creativity in your washing machine can be patented. Is it? Are you getting? I hope you are getting me. Are you able to understand? Mrs. He, जरूरी नहीं है कुछ चीजें इन्वेंट करना, चीजें ऐसे भी है जो इन्वेंटेड है, उसमें मॉडिफिकेशन करना, उसमें क्रिएटिविटी करना, that can also be patentable. So the idea very important कि हमें आइडिया पेटेंट सर्च कैसे करेगा, until and unless you achieve your goal, once thinking, अगर मुझे ऐसा लगता है, मेरे दिमाग में एक इन्वेंशन है फॉर माय वॉशिंग मशीन, कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद ड्राई तो होते हैं, आधे तक सूख जाते हैं, सूख जाने के बाद बाहर भी आने चाहिए, निकालने वाला को नहीं चाहिए। सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वहां अगर एक कुछ रख देते हैं, चीजें रख देते हैं, तो वो फोल्ड होके वो कपड़े ड्राई होके सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो पूरे सूख जाने चाहिए, उसमें फोल्डिंग होने के बाद वो बाहर निकलने चाहिए। मैं कर सकती हूँ मॉडिफिकेशन, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल। आई हैव टू गिव दैट इन्वेंशन, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू माय इन्वेंटिव स्टेप्स। मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हाउ इट माइट बी पॉसिबल। मींस until and unless I achieve my keywords, I achieve my goals, I can able to search the patent into some patent search sites. You can go for it. These are some patentable search sites. सबसे अच्छा गूगल बाबा तो है ना? कुछ भी चीजें वहाँ मोड़े देता है, उसके अलावा उसके जैसा तो कोई इंसान ही नहीं है आपके देखते, गूगल बाबा जैसे, है ना? वो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, चीजें आपने बोली और वो चीजें आपको मिल जाती है। उसके अलावा भी पेटेंट सर्च करने के लिए कुछ आइडेंटिफाइड सर्च है, जैसे अगर हम गूगल स्कॉलर रिसर्च पेपर्स, आप लोगों को रिसर्च पेपर पे भी एक लेक्चर की बहुत ज़्यादा जरूरत है, आप लोगों को रिसर्च पेपर मुझे आता नहीं है, तो रिसर्च पेपर्स हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसका कीवर्ड्स अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने में सिमिलर वर्ड ऑलरेडी रैंडम है, दैट इज नथिंग बट डिफरेंट कीवर्ड्स हमको अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम वर्ड्स हमारे डाल के देते हैं, अगर सिमिलर मिल गए तो दैट इंडिकेट कि वो है किंतु भी अस्तित्व में है, isn't it? So for that there are some search site called as a WIPO, USPTO, next
कर डाली, जो मेरे इनोवेशन उसको कर डाला, लेकिन वो इनोवेशन को अगर मैंने वॉशिंग मशीन की वर्ड डाला तो वो पेटेंटेबल कभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वॉशिंग मशीन में वर्ड है, isn't it? तो मुझे कुछ तो क्या डिफरेंट टाइप के वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल मशीन और आयरन ड्रायर एंड क्लीनिंग मशीन, isn't it? Some type of the words, keywords I have to identify to represent a single device called as a washing machine. Okay? By changing some of the features, by changing some of the specification of your washing machine. पहले सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, अभी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई. Have you seen? है ना? तो this is what the creativity. एक वॉशिंग मशीन ऑलरेडी इन्वेंटेड थी, इसी वॉशिंग मशीन में कुछ मॉडिफिकेशन किया और दैट इज पेटेंटेबल. पेटेंट करने के बाद क्या होता है, चीजें हम दुनिया में लाते हैं, चीजें लोग उसको खरीदते हैं और उससे पैसे जनरेट किया जाता है. तो जो भी ओनर है जिसने पेटेंट किया, कब तक रेवेन्यू जनरेट हो सकती है? 20 साल, 20 साल तक वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है एक डिवाइस से. ठीक है? सो दीस आर द साइट्स. आपको डेटाबेस कहां से मिलता है? वन स्लाइड देखो, आपको डेटाबेस मिलता है कि अभी तक कितने पेटेंट्स हुए हैं, कौन कौन से चीजों पे पेटेंट हुए हैं. अगर आपने चीजों वॉशिंग मशीन पे अगर मुझे पेटेंट करना है, उसको नींद आ रही है. हाँ तुझे, जो तुझे देख रहा है, तुझे नेक्स्ट सेकंड हाँ यॉर्निंग क्यों कर रहा था, कौन कर रहा था उसको पता है यॉर्निंग कौन कर रहा है. हाँ उसी को पता है वो यॉर्निंग कौन कर रहा था. So these are some commercial sites where you can find out whatever the invention you are doing, whatever the thought process, whatever the idea यहाँ हम आइडिया पेटेंट कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस हम कॉपीराइट कर सकते हैं, आइडियाज को पेटेंट कर सकते हैं. ओके, सो these are the some commercial websites where you can identify कि ऑलरेडी जो चीजें आप कर रहे हो वो पेटेंट है या नहीं. सो यू कैन चेंज द कीवर्ड्स, नॉट स्मार्टली, यू हैव टू स्मार्टली आपको पेटेंटेबल करना पड़ता है. कंपोनेंट डिवाइस अगर हमारे पास है, प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, तो उसको बहुत स्मार्टली तरीके से आपको उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है. दैट इज कैन बी एबल टू पेटेंट. दैट इज अ सेम वॉशिंग मशीन. या you can say a washing machine, it is a single device, isn't it? If I want to make a modification and I can able to change the keywords of the washing machine so that I can able to make it patentable. Okay, so the keywords, that is fabric cleaning device, that represent to the washing machine after making the modification. Automatic cleaning device, okay, drying means for cloth, centrifugal separating water from laundry, rotating the for rising. These are the keywords you can represent for the single device, single product, that is called as a washing machine. Okay, next, or either you can use some boolean algebra, boolean operation and or इस टाइप के ऑपरेशन का भी यूज करके हम डिवाइस के कंपोनेंट दैट इज अ कीवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट कैन बी एबल टू मेक द पेटेंटेबल. नेक्स्ट समथिंग वेरी इंटरेस्टेड, व्हेन वी गो फॉर द मोबाइल, है ना. पहले 2000 में जो कंप्यूटर्स यूज करते थे, हैव यू सीन व्हाट वाज द साइज ऑफ योर मॉनिटर? CRT type, is it? Now, what is the type of your monitor? It is a flat type, is it? Is it? Means a computer is of existence. Only what it is done, the creativity is being done, and the product comes into the market. That is, before coming to the market, it is patentable. It have been done patent. Okay. Similarly, for the mobile also. पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट के मोबाइल थे, अभी हम एंड्रॉइड यूज करते हैं. इसके अलावा कौन सी दुनिया, कौन सी
पे जाएंगे, पता नहीं आप ही को लेके जाना है दुनिया को आगे. Isn't it? You have to bring that thought process how you can make some creativity in the mobile. Is it? Next. So, any ideas can be patentable. What I want to tell. Any ideas you can. जैसे ही दिमाग में चीजें आई तुम उसको पेटेंट कर सकते हैं. अगर पेटेंट करने के दो तरीके हैं. इसको भी आइडिया आई, इसको मैंने डाल दिया रजिस्ट्रेशन के लिए. इसको हम go for the next slide. There are a number of offices for the patent. As it belongs to the Nagpur, the appropriate office is okay for us. Next, yes, very important. How? That is a milestone involved in patenting. Invention आया, इन्वेंशन के बाद ड्राफ्टिंग करना पड़ता है. वेरी चीजें है ना, चीजें तो बहुत सारी है. चीजें तो दिमाग में चलते फिरते दिमाग में चीजें आती है. पता नहीं आप लोगों के दिमाग में कौन सी चीजें आती है, आई डोंट नो. वो भी है कि तुम किस तरीके से सोचते हो, है ना. मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलते फिरते ही बहुत सारी चीजें आती हैं. और मैं शायद बहुत सारी चीजें बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ ना कुछ बताते ही रहती हूँ. फालतू चीजें बताने से अच्छा मुझे कोई टेक्निकल चीजें अगर बताती हूँ तो आई थिंक दैट माय डे इज वेरी हैप्पीएस्ट डे टुडे. ये मेरे थॉट प्रोसेस, ये मेरी सोच है. हर किसी की सोच डिफर कर सकती है. इज इट? नाउ आता कोई नहीं ना, लेकिन सोचने के लिए और समझने के लिए कोई आता है क्या? आज एक लेक्चर लेने के लिए बोला, आए क्या स्टूडेंट्स? नहीं. रोज प्राजक्ता को फोन करना पड़ता है, रोज प्राजक्ता को फोन करना पड़ता है. प्राजक्ता स्टूडेंट कितने आने वाले हैं, आएंगे या नहीं आएंगे, क्वेश्चन मार्क है. और इतने हैं स्टूडेंट, कभी कभी तो फोन भी रिसीव नहीं करते. आई एम वेरी बिजी, है ना. क्यों? डोंट माइंड, डोंट थिंक कि चीजें इसके लिए कर रहे हैं. यू हैव टू टेक अ पेनफुल थिंग्स. पेटेंट करना है, पेटेंट करना, पेटेंट ऐसे नहीं मैंने सोच लिया और लिख लिया. इसके लिए आई हैव टू टेक अ लॉट ऑफ पेन टू डू एन एक्टिविटी. घर पे गणपति बैठने ही वाला है ना, गणपति बैठने से तैयारी से लेके विसर्जन तक द फैमिली हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. Is it? Means anything is not possible without efforts. Everyone have to take an effort because that goes to your credit. Is it? Okay? So you have to, when you comes your mind, once invention steps comes into mind, you have to start for the drafting the specification. आपको ड्राफ्ट करना पड़ता है. तो ड्राफ्टिंग आप करने से पहले we can register for the copyright, which is called the provisional specification, and after a certain time, that is after a year, it gives a complete specifications you can place after 12 months. ठीक है? तो provisional and complete specification, these are the two. अगर आप अभी किसी स्टूडेंट को आपको लगता है कि ये मेरा पेटेंटेबल डिवाइस है, प्रोडक्ट है, तो आज ही आप पेटेंट प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डाल के फाइल कर सकते हो. प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक 12 महीने तक आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन साइमल्टेनियसली बना सकते हो. ठीक है? तो दैट इज नथिंग बट अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यू कैन पुट आफ्टर अ मंथ. या यस, कितना मिनिमम और कितना, या आई एम टेलिंग यू वन बाय वन. Publication of an application before going for the patent. If you are going for the patent, don't publish any paper. आप पेपर पब्लिश नहीं करना. आप पहले पेटेंट फाइल करना. पेटेंट पब्लिश होने के बाद, पेटेंट पब्लिश होता है and every Friday patent office is used to publish a paper. जो भी आपने डाला है उसको पब्लिश करता है. Once पेटेंट पब्लिश होने के बाद ही आप अपने चीजों को पब्लिश कर सकते हैं. यूजीसी जर्नल में, एससीआई में, सुपर्स में, जहां भी आपको पब्लिश करना है वो कर सकते हो. ठीक है? तो ये चीजें याद रखना जरूरी नहीं है. प्रोडक्ट बनने के बाद उनको पेटेंट कर सकते हैं. वंस अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपना प्रोजेक्ट, तो आप अभी ही
पेटेंट फाइल कर सकते हैं बाय द मींस ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड आफ्टर अ ईयर कंप्लीट ईयर आपके पास है ड्राफ्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कैन बी पुटेड विद इन अ ईयर आफ्टर 12 months you can go for the publication complete specification. अब इसका अपोजिशन आता है एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग 18 months it takes 18 months to publish a patent. आपने पेटेंट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डालने के बाद 18 महीने तक नेचुरली 18 महीने लगते हैं, 1.5 साल लगता है आपके पेटेंट को पब्लिश होने के लिए। अगर आपको अर्ली पब्लिकेशन में जाना है तो 18 महीने से पहले ही आपको अगर पब्लिकेशन करना है तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी टू द गवर्नमेंट टू पब्लिश योर पेटेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अर्ली पब्लिकेशन। आफ्टर अर्ली पब्लिकेशन इफ यू वांट टू गो फॉर द ग्रांट, आपको अपने प्रोडक्ट का ग्रांट जैसे कमर्शियल यूज के लिए, सोसाइटी के यूज के लिए अगर आपको करना है और रेवेन्यू जनरेट करना है तो यू हैव टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। Okay, that examination is to be filed within 18 months. Within 18 months. Then only then it will be grant for patent. Okay, examination देना पड़ता है, हमको नहीं देना पड़ता, ये देना पड़ता है IETE एजेंट के थ्रू देना पड़ता है, ठीक है। So this is nothing but then only your patent, your product, your process will be called for the grant of patent and revenue will be generated from that patent because it is used for the commercial use. Next slide. Remember, one invention, one application. एक invention एक ही application डाल सकता है, ठीक है। I will not go और डाल सकता a small entity, a natural person or others. कंपनी वाले, एक entity, a small startup or a natural person like you and me, we can apply for the patent according to the section 6. Okay, this is what this. So remember, one invention, one application for the patent. Next, जरूरत नहीं आपको बताने। हाँ, provisional classification and complete classification. As soon as idea comes into your mind, you can file for the patent. ठीक है? And next, what will next? While drafting the specification of a patent, there are some certain rules that you have to use A4 size paper. You have to use either in English, that must be without plagiarism. हमें जो लिखना है इसको हमने कहीं से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, वैसा पेटेंट चलता नहीं, इवन रिसर्च पेपर भी नहीं चलता। बच्चे लोग यही करते हैं, इसलिए एक रात में 24 घंटे पे पेपर पब्लिश करके लाते, पता ही नहीं कैसे लाते, भगवान जाने। तो ऐसे फर्जी लोग भी बहुत सारे हैं, एक रात भर में पेपर को पब्लिश कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग। अगर आप एक बार रॉन्ग तरीके से जाते हैं तो यू विल बी blacklisted for the 5 years. You never used to do any publication in any reputed journals. Okay, so the font size which is being used, it is 0.25 centimeter. This is what the norms. These are what the specification which is to be while drafting the patent. Okay, next slide. If any drawing, you have to take the shape and you have to draw it. Okay, इस अभी आप डालोगे ऐसा जरूरी नहीं है, जो डालता है उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। Now very important, पेटेंट ड्राफ्ट करते समय, पेटेंट फाइल करते समय आपको फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 एंड फॉर्म नंबर 5, these are the mandatory forms which is to be written. आपको फॉर्म नंबर 2 is all about the drafting of the patent. फॉर्म नंबर 2 which is all about the drafting of the patent, जिसमें हमको इन्वेंशन स्टेट क्या है, टाइटल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ड्राइंग कैसे है, प्रोविजन आपके ड्रॉबैक्स क्या क्या। कोई भी चीजें नई इन्वेंशन करते हैं, पहले प्रोडक्ट में कुछ तो भी ड्रॉबैक थे, उस ड्रॉबैक को आप रिमूव कर रहे हैं बाय सम टेकिंग सम इन्वेंशन स्टेप्स, ठीक है। एंड फॉर द कंसर्न इज ऑल अबाउट द ऑथर्स।
who is the applicant, who is the investigator, who is the innovator for the patent. Publication of an application after 18 months, it will be by natural way, it will be patent after 18 months, or you can apply for early publication. So you have to pay, you can find, that is natural percent. Once you file for the patent, you have to give me 1600 rupees. अगर आपको चाहिए तो मैं by Thursday कब आ रहा है? Monday. By Thursday, I am filing one patent for the department. So you can see what is the process for filing the patent. Natural person will register for 1600. यहाँ 1600 रुपए देने पड़ते तब हम पेटेंट फाइल कर सकते हैं. Small entity means एक entrepreneur या industry person can go for the 4,000 rupees and others 800 rupees. Early publication करना है तो natural person को 2,500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं. Early publication 18 महीने तक नहीं रुक सकते आप, आपको जरूरत है. You can do. Next. So this is the site where you can go for the patents. Yes, next. यहाँ हम E-filing में पेटेंट कर सकते हैं. जिसको भी पेटेंट फाइल करना है या सोच सकते हैं हमको एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट पेटेंट करने के डिपार्टमेंट से देखना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट की सिवियरिटी कितनी है, कितने इन्वेंशन है, कितनी इनोवेशन है, कितनी क्रिएटिविटी है आपके प्रोजेक्ट्स में. देन आई कैन थिंक अबाउट द पेटेंट, इट इज अ पेटेंटेबल project or not. We can go for this. So you can check the process. जिसको कॉपीराइट करना है, किसी के पास पोयम होगी, स्टोरी होगी, कुछ होगा, तो आप मेरे पास आ सकते हैं. I can tell you how to register for the copyright. So this is from my side. I think you have taken away something from this lecture. कम से कम इतनी तो चीजें पता चली होगी आप लोगों को कि what is IPR, क्या है. चलो करनी कैसे है वो तो चीजें बात की बात है, लेकिन क्या है और कैसे है, कौन कौन से उसके अंदर में कैटेगरीज है, टाइप्स है, ये तो समझी होगी. So this is what take away from this lecture, and I am very much thankful to the students that you have cooperated me, that you have listened me. So thank you so much for your time. Definitely I will help you in any way, whatever if I am having. Okay? Thank you. Thank you very much, ma'am, for your guidance. Hope students got the idea about how to file any copyrights, patent,